Okay, so Nigar, we are like, okay, so welcome back to the session, and we will talk about how to clear an interview, what is expected from a person who is appearing in an interview, what goes on, and how a person is selected, what are the basic criteria to do that. So, that is what we'll cover today. We will also talk about some of the basic interview questions and how to answer what exactly is an expected answer for that. And some of the tricky questions, something related to gap and career gap, these things will also be covered. So let's start. Okay. So what exactly happens? What goes on? Interview is a process. Interview is a process. It is not just question and answer session. So whatever is asked to you is asked with an intent. There is a reason why a person is asking something to you, and once you respond, he will evaluate you on that. That is the entire interview process. So go prepared. The first thing, the basic reason why people get rejected is the fear. Because of fear, they lack confidence. They are unable to speak. So fear is the basic reason why people, first of one of the primary reasons why people get rejected. So you have to overcome fear. How you can overcome? Be prepared. Before going for an interview, before going for a meeting, before doing anything new, you have to be prepared for it. For example, just if you're appearing for an interview, what you have to do, just go through your resume once, what you have updated in your resume. If you have prior experience, which year you completed your education from a particular company, what was your start date there, what was the end date there, what was the reason for leaving that company. If you have done some internships, what was the duration of the internship, what was the start duration, what was the end duration. So all these things should be there in your resume, and you should go through your resume once again. Once you are clear with this, whatever is there in your resume and your thought process, once these two things are synced, then speaking in an interview turns out very easy. Okay, and this will automatically clear the fear because you are aware about what you will be talking about. So एक जो डर रहता है वो खत्म हो जाता है, and ultimately once that gets over, then you feel confident. So preparation is very important. Prepare करके चले जाओ resume के through. You should know what exactly is going on. The second thing is, first two questions that are asked in an interview are very important, because these first question, suppose an interview asks you, tell me something about yourself, and you, if you fumble here, if you get stuck here, then it's like he will judge many things from the first question itself, whether you can communicate, your level of confidence, how good you are, your personality, how confident you are, how you can talk, his eye contact, everything. So specifically these particular question, right? Tell me something about yourself or introduce yourself. Whenever this question is asked, you have to be very much prepared for that. So दो तीन lines जो है, just keep it in mind that this is how you will say, but do not say like you pit pat things. Do not do it like that. It should come out naturally, but you should know what you say. And once you utter once you say this first two sentences in a good go, then ultimately पूरा का पूरा interview goes very smoothly. An interview, one again another reason why people do not get selected or find it difficult to express is they do not continue the interview as a discussion. They just conduct an interview as if they have learned something. If question is asked, then they just respond. That is not how question and answers are supposed to be responded. So it's again the important thing. First of all, अपना जो confidence है, just let it be, और at the right moment एक बार prepare करो, उसके बाद में confidence को सही तरीके से रखो. Then prepare well, resume के साथ अपना align करो. Communication, if you are somewhat not good with communication, at least prepare first two sentences, so that initial जो thing रहता है ना, वो automatically click हो गया तो nerves काम हो जाते हैं, और बाकी की चीज़ें, as long as you are able to express yourself, and if it's not a voice role, or if it's not a role wherein you have to daily interact with clients, then you will get selected. ऐसा भी जरूरी नहीं कि इंग्लिश बहुत परफेक्टली वो आना चाहिए. You keep working towards it, मगर as of now अगर वहाँ पर अपना perfection नहीं है, so then also it's fine. Okay, so what this is the basics of it. He will start interacting with you. He will start having discussions with you. You have to keep in mind, you have to understand the mindset of the interviewer. Why is he asking this question, and what is he expecting from you to respond.
द फर्स्ट थिंग इज वेन एवर कॉन्फिडेंस तो हो गया, चलो कॉन्फिडेंट का अपन ने बात कर लिए, बस उसके बाद क्या होता है, कॉन्फिडेंस के बाद कम्युनिकेशन भी हो गया। कम्युनिकेशन, फ्यू थिंग्स, यू जस्ट बी अ गुड कम्युनिकेटर, डू नॉट जस्ट रन विद व्हाट यू हैव टू से, लिसन प्रॉपरली, टेक अ पॉज, रिस्पॉन्ड। इतना करोगे तो आप कम्युनिकेशन भी कामफुली रिप्लाई कर दोगे, ज़्यादा हरी बरी में मत करो तो हो जाएगा। द थर्ड important thing that an interviewer wants you to be is committed. Once interview selects you, then he will want you be there in an organization for a longer duration. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिलेक्ट हो जाए और उसके सिलेक्शन के बाद यू स्विच टू अनदर जॉब आफ्टर 3 months, 4 months, 5 months. दिस शुड नॉट हैपन, बिकॉज इनिशियली फर्स्ट 2 to 3 जो मंथ्स रहते हैं, उसके बाद जब तक तो ट्रेनिंग ही चलता रहता है, थोड़ा सा लर्निंग फेज चलता रहता है, जब तक इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस भी एक्सपेक्ट नहीं रहता है, फिर उसके बाद जो है देन एक्चुअल टाइम कम्स टू परफॉर्म. So the interviewer, if even if he's part of talent manager, or even if he's a part of your project manager, or if even if he's a recruiter, कोई भी राउंड रह सकता है इसमें से, the primary expectation रहता है कि आप committed रहो. So he will ask you various questions to find whether you are committed for this particular job. For example, if you are a fresher, he may ask you, okay, is it that you are planning to go for higher studies? So there are two things here. If you are going for a higher study, a full-time course, and the course is which is not relevant to your field whatsoever, then the interviewer will easily understand, okay, this person is just joining us for few months. ये अपने पास join करेगा, थोड़े से he will just earn quick money, and afterwards he will just move on. So, and other thing is, if you are doing some part-time courses which would again enhance your skill set and enhance the way you work once you are selected in an organization, then a person will prefer to go ahead with that type of person. तो अपन कुछ भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ भी लर्न कर रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो आइडियली स्पीकिंग इट शुड गो एंड हेल्पफुल फॉर दैट पर्टिकुलर स्किल सेट वंस यू गेट सिलेक्टेड. ठीक है, और वो हायर एजुकेशन, गोइंग अब्रॉड एंड ऑल दीज थिंग्स इफ यू आर प्लानिंग टू डू, if you say all these things in an interview, you will not get selected. And actually, if you are doing planning for these things, then the internships are the best thing for you. 2-3 महीने के internships करो, get some experience, get some corporate learnings, and just move on. So first of all, communication हो गया, उसके बाद confident हो गया, उसके बाद जो हो गया commitment हो गया. Other thing is that a positive mindset is expected to be there from everyone. So he will ask you various questions just to see how positive you are. For an example, what will you do if you get stuck in this particular situation? How positive you are and how good you will be when you will be actually working and at the floor. How you will motivate the team? Will you be self-motivated? Will you be able to manage things on your own? So these would be the things which he would ask you to do. And he may ask some of your personality traits, some of the strengths, some of the learnings throughout your life, the high points, how you tackle that situation, and he may give you some scenarios to see that whether you will stick to the company and how quickly you get motivated. For example, if project timeline is not getting filled, what would you do? So these type of questions will be asked. So ultimately you have to ensure that you show positivity. Positivity बताओ कि you will see that how things can be done in this particular manner. Vague answers भी नहीं देना है, out of box thinking जाके beyond something भी नहीं देना है, कि it should be practical, it should be practical to be achieved, but the positivity, the intent should be there. That's uske baad another thing is flexibility, guys. Flexibility is another important thing which the interviewer expects an employee to have. For example, if you are getting selected, companies, the way they work, one MNC can be there at multiple locations. You may get selected in one company, specifically as a fresher. You may get selected in one particular company, but the project which you will be working on will maybe some in another company, another location. So, as ideally speaking, you being a fresher, you are trying to gain that particular initial phase, initial experience. You should be flexible to different locations as well. That is the primary expectation. So allow accordingly, if he asks this particular question, then it should be yes. If it is no, if really you have some genuine concern, then you can just point it to him then and there itself. और अगर select होने के बाद कुछ concern आता है, if it's a genuine, then you can just walk up to your trainer, or you can just have a discussion with the talent manager, something like that, and just try to sort it in a good proper discussion.
बट फ्लेक्सिबिलिटी एक्सपेक्टेड रहता है. और उसके बाद जो है पीपल में आस्क व्हाट इफ यू आर आस्क्ड टू एक्सटेंड सम आवर्स. जनरली बार बार नहीं होता है, बट एट टाइम्स अगर प्रोडक्टिविटी जो करंट सिचुएशन में, फिर टीम इज इन करंट सिचुएशन, दिस टाइप ऑफ थिंग्स डू हैपन. So they are just trying to find out how committed you will be. If required, will it be possible for you to extend? So यहाँ पर भी slight flexibility रहना चाहिए. If you showcase this type of characteristic, if you are flexible, at times what happens is if you have a particular skill set, and if the requirement is not of that particular skill set, or the project is not getting that requirement, but the skill set which they have is somewhat blend of the skill set that you primarily have. You got it right? आपका एक स्किल सेट है, आपका एक स्किल सेट है, रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली वो स्किल सेट के साथ साथ और भी कुछ चीजें हैं विच आर एक्सपेक्टेड फॉर यू टू लर्न. सो अलॉन्ग विद योर प्राइमरी स्किल सेट, इट्स नॉट दैट प्राइमरी स्किल सेट को छोड़ दे के यहाँ वहाँ स्विच करो. नो, you should have one primary skill set throughout your life. So just choose what would be a primary skill set, and around those primary skill set, you can have various. You can go ahead and do various things, various addition courses. There are some blended requirements. अगर for example, if we talk about IT, Unix के साथ साथ PL SQL का हमेशा requirement आता है. फिर Python के साथ साथ SQL का requirement आता है. So just blended requirements which can help you. You can just look an eye on that as well. So primary thing, whatever the question is asked, if you are answering to the person, keeping in mind all these factors, if you feel confident, if you are having a good communication, if you have a positive mindset, if you have a good communication, if you are adaptable, if you are flexible, अगर आपके answers ये सब चीजें उनको elaborate करते हैं, if you exhibit that in your answers, then you can clear any given interview. कुछ ऐसा सीन ही नहीं रहेगा कि अच्छा ये इंटरव्यू में ये क्वेश्चन को क्या आंसर करूं, ये इंटरव्यू में ये क्वेश्चन को क्या आंसर करूं. यू जस्ट हैव टू बी सेंसिबल एंड यू हैव टू कीप रिस्पॉन्डिंग. बट यस, क्वेश्चंस क्या क्या पूछते हैं उसके बारे में एक बार देख लेना चाहिए, उसको कैसा रिस्पॉन्ड करना चाहिए. यू हैव टू जस्ट हैव अ लुक एट दैट एंड अकॉर्डिंगली उसको जस्ट रिप्लाई. दैट इज हाउ इट शुड बी. ओके, इट्स वेरी सिंपल. और उसके बाद जो है गाइस, पर्सनालिटी देखो, वी ऑलरेडी स्पोक अबाउट पर्सनालिटी डे बिफोर यस्टरडे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. डे बिफोर यस्टरडे और 2 days बैक वी स्पोक अबाउट पर्सनालिटी. इट्स वेरी सिंपल गाइस. कॉन्फिडेंट रहो. The way you talk, the way you express yourself, your body language, the movement of your hands, the whole shoulders going up and down is not good. Sitting with folded arms is not good. Maintaining proper eye contact is good, but it doesn't mean that throughout the discussion you have to look into the eyes of that person. It's not that. But 60%, 70% look into the eyes of the person, and then you can just look here and there. It doesn't mean that you will look across the walls or something, but आँखी से अलावा भी देख सकते हैं. So that is how it is supposed to be. Do not be too restless. Calm down. ज़्यादा आगे मत bend करो, ज़्यादा पीछे मत bend करो, फिर ज़्यादा किचन के साथ मत खेलो. Just be relaxed, calm, composed, and start talking. So if you answer keeping in mind whatever we have discussed now, you can clear any given interview. It's like I have cleared many interviews in my life. The only interview which I didn't clear was my first interview. I don't know the reason why I didn't clear that. I was fresh here. I went there. I appeared for that interview. It was in a company named EXL. I really don't know what happened, but it was my first interview, so experiences are there. Other than that, I gave many interviews and I have cleared all the interviews and all big MNCs. And how? By just being natural, being just being sensible, by just being yourself, by not being over exaggerated. Just give them a feeling that okay, this guy is a genuine guy. And once the person feels that you are genuine and whatever you are saying is right, he will automatically select you. Like Deloitte में मैं select था, फिर उसके बाद Genpact में I was selected, then Persistent में I was selected, Worldwide Network Services में I was selected, Cognizant, Capgemini. I was having multiple offers at multiple times, और I was selected, and that too in a global workforce management team जहाँ पर बहुत ज़्यादा applicants रहते हैं और लोग कम रहते हैं अप्लाई करने वाले. नहीं, अप्लाई करने वाले बहुत रहते हैं बट पोजीशंस बहुत कम रहते हैं. सो हाउ? बी सिंसियर, बी सिंसियर, बी जेन्युइन इन वॉट एवर यू से. डरना नहीं है, नर्वस नहीं होना है. इफ इट इज देयर, इट इज देयर. अगर गैप है करियर में तो गैप है करियर में, नथिंग टू वरी. इफ इट्स अ जेन्युइन गैप, then no one will say you anything. Like if you have worked for 2 years, then there is a gap for 1 year because of some genuine reason. Genuine reason can be anything. Family में समझो something wrong has happened,
someone wanted you to be there for some health condition. You were there, and at that particular time you were not in a, you would have not done justice to the job as well as your family. So you decided that you will do priority, you will prioritize that at the family. So you took a break. At the same time, however, you were learning and upskilling. The best way to tackle the gap, if you are having a gap, the best way to say is, okay, if there is a family crunch situation, just tell them the way it was. Uske baad say, I wanted to do justice to both my job as well as my family, but it would not have been possible if I would have worked. So I spoke to my manager, and he was also okay. There was already a backup. So I resigned, and for 1 year or so, I completely gave my attention to the family, and now things are well. And this is my skill set. I worked on it while I was at home. I learned this technology, and now I'm back. Simple है guys. It's very simple. उसके बाद में, how you can, if you have completely, if you are a fresher, if you are a fresher and if you have not been selected for a year or two, then that is the time when situation actually gets tough for you. So what will you do, guys? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल गैप जब होता है, जब अपने को रिक्वायरमेंट्स नहीं मिलते, प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते, दैट इज व्हेन द गैप कीप्स हैपनिंग. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये गैप जो होता रहता है, इसमें यू हैव टू लुक कीप एक्सप्लोरिंग फॉर इंटर्नशिप्स. ये गैप को मत होने दो. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट दिस गैप डू नॉट एक्सटेंड टू दैट पॉइंट. अगर ऑलरेडी गैप हो गया है, ऑलरेडी गैप हो गया है, तो सी इफ यू कैन ऐड सम एजुकेशन टू इट. अगर if you were studying something, if you are upskilling yourself, let this gap, instead of showing at that particular gap, you can say that you were adding some experience to it, expertise to it, and at the same time you were giving interviews, but the interviews but somehow the requirements were not there, the situation was not good. So I thought of preparing myself towards it. I did some internships, if not internships, I did some trainings, I did some projects on my own. That is how you can tell. और 2-3 साल तक के भी लोग फ्रेशर बोल के हायर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली इन्फोसिस ने हायर किया था, लाइक 2019 पास आउट, टेक महिंद्रा, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट, 2019 पास आउट, 20 पास आउट, 21 पास आउट, सबको फ्रेशर बोल के ही हायर कर रहे थे. टीसीएस एनक्यूटी का जो रहता है गाइज, राइट, इन लोग तो मास्टर्स को भी, मास्टर्स डिग्री होने के बाद भी एज अ फ्रेशर हायर करते हैं. सो इट शुड बी जेन्युइन. और उसके बाद में आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाता है अगर आपके पास टाइम है. इफ यू हैव ऑलरेडी डू नॉट हैव, इफ यू आर ऑलरेडी इन दैट फेज जहाँ पर 6 महीने का गैप हो गया, अब तक जॉब नहीं मिला है, तो यू कैन जस्ट से दैट आप स्टडी कर रहे थे, उसके बाद इंटर्नशिप के वास्ते कर रहे थे, यू आर प्रिपेयरिंग ऑन सम इंटर्नशिप्स, एंड दैट इज हाउ यू कैन से. सो दैट इज हाउ यू जस्टिफाई योर जॉब. ठीक है, जस्टिफाई योर गैप. फिर उसके बाद गाइस, अभी काफी सारी चीजें डिस्कस हो गए. We will just discuss something about some of the questions which are generally asked in an interview. Or guys, whatever we have discussed, this is apart from technical. Technical में तो you have to study. कौन से भी field के रहने दो आप. If you are in IT, you have to study about your skill set. If it's non-IT, if it's mechanical, about that skill set, you should have that thorough knowledge and understanding about your skill set. ठीक है. फिर उसके बाद जो है, टेक्निकल में फ्रेशर हो अगर तो ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं रहता है, बट कोडिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ability to learn, the important thing that we didn't talk about, ability and expressing that you are ready to learn anything at any given point of time, that is what is expected from a fresher. Most of the companies, they hire a person who is trainable. अगर आप ट्रेनेबल हो, अगर आप आपका विलिंगनेस बता रहे हो लर्न होने करने के लिए, ट्रेन होने के लिए, दैट इज व्हाट दे आर लुकिंग एट. बाकी तो हम लोग ट्रेन कर देंगे. ठीक है. अब उसके बाद जो है टेक्निकल, तो आप यू कैन सॉल्व इट लाइक दिस. फिर इफ यू टॉक अबाउट इंटरव्यूज, इंटरव्यूज में देखो अलग अलग तरीके के राउंड्स होते हैं, कॉन्सेप्ट सेम हो रहते हैं. इफ देर इज अ बिग ह्यूज नंबर ऑफ पीपल आर अपियरिंग इन एन इंटरव्यू, देन दे विल बी डिवाइडेड इनटू इक्वल ग्रुप्स. जस्ट अ मिनट सेशन बोल के एक सेशन रहता है. यू विल बी आस्क्ड टू स्पीक फॉर 1 minute ऑन अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक. और ये बात करते टाइम पे रिक्रूटर फील्स द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, लेवल ऑफ कम्युनिकेशन. फिर अगर उसमें आप सिलेक्ट हो गए तो यू विल मूव अहेड. सिमिलरली ग्रुप डिस्कशंस रहते हैं, उसमें ऑल्सो यू हैव टू मेक अ पॉइंट, यू हैव टू टॉक नाइसली, you do not have to get over agitated. Express your points in a proper manner. अगर आप 5 मिनट के डिस्कशन में आप 3 से 4 पॉइंट्स भी रेज कर रहे हो, if your points are making sense, that is also good. Group discussion में it is not that you have to be the first person to speak. The person who speaks first automatically get noticed,
But at the same time, if you are not sure about the topic, then it's better not to be the first person, because it's better not to start it with on a wrong note. ठीक है? तो एक ग्रुप डिस्कशन रहता है, फिर एप्टीट्यूड टेस्ट रहते हैं, एप्टीट्यूड कंप्यूटर पे होता है। आजकल लोग जो है दे आर गोइंग अहेड विद सम गेमिंग टेस्ट, दे हैव देयर ओन सॉफ्टवेयर। फिर लॉजिकल रीजनिंग रहता है। तो ये सब चीज़ें रहते हैं जो कि आप करोगे तो आप क्लियर हो जाओगे इंटरव्यू में। उसके बाद सम वी विल टॉक अबाउट सम ऑफ द बेसिक क्वेश्चन। फिर उसके बाद जो है अपन वाइंड अप करते हैं। ओके, सो हाउ डज इट एक्चुअली स्टार्ट? It primarily starts with introduce yourself or tell me something about yourself. Okay. Yes, I was having a discussion with one of the persons in an interview. I asked him this particular question, tell me something about yourself. And he kept speaking, he kept talking for long 5 minutes. I tried to stop him, but he was like, he had pit patted it something. So what he did was, in that introductory part, he told about himself, then he started talking about his entire resume. That is not expected from this particular question. This particular question is supposed to be 2 to 3 points. Tell me something about yourself. May if you are a fresher, just tell them which your location, where are you from, then highest qualification. If you want to say, just say something about that, and just say that you are trying to you want to build your career as a software developer or any respective field, and just give them the family background about for how many siblings you have, something. Just give that to them. 2 to 3 liners, that should be okay. और उसके बाद जो है, if you are experienced, just tell them how much experience do you have, how many companies you have worked with, just an overview, and when you started your career. So by doing this, then you are opening up discussion. फिर वो दूसरे questions पूछेगा. Then he will ask, take me through your resume. What does this mean? Okay, it means nothing, but he's trying to say that कि क्या आपके experience resume में क्या है आपका, just tell them something about that. तो उसके बाद में you will take, if you have done some internships, you can tell them about the internship that you have done, the latest internship, the duration of that, what all things you did in that. If you are experienced, start with the latest thing, और उसके बाद में उसको नीचे नीचे drill down करो. That is the advisable way. Other than that, if you start from when you completed your education और वहाँ पर step by step लेकर जा रहे हो, that is also okay. ऐसा specific format नहीं रहता. Like you say that 2007 में आपका complete हुआ education, then you joined this particular company, then you went ahead. That is also how you can talk. At the same time, you can say that the latest company followed by previous companies. So that is how you take them through your resume. फिर family background, guys. At times people ask you about your family background. So there are a few things why a recruiter is asking for a family background. ऐसा तो नहीं है कि भाई family background, ऐसा तो नहीं है कि family work करने वाले, it is we who will get selected और अपन ही काम करेंगे, right? तो family background के बारे में क्यों पूछ रहे हो? So why they are asking that is, they will judge you, they will judge where you come from, what are your expertise, and how do you really want to be a professional. For example, if your dad, if he is a serviceman, if he has worked in an industry, then you can say that it goes in your favor. Like your dad has worked as a private serviceman, he was a private professional in his territory sector, something like that. Then it gives a feel to the recruiter that, okay, his dad has also been in the similar industry, service industry, and that is how he also want to be in that industry. And what if your dad is a businessman? Then comes a doubt, okay, then why is it that you don't want to join that business? Then you can say, no, I'm passionate about this thing, I have been learning this thing, I want to make my career in this. That is how you can say. If your siblings, your brothers, if your sisters, if they are also educated, if they have also been working in some of the industries, IT industries, this thing goes in your favor. So family background में, that is what how you have to answer, that is what they expect you to answer. Okay. फिर उसके बाद जो है वीकनेस स्ट्रेंथ का क्वेश्चन रहता है. दे आस्क के स्ट्रेंथ क्या है. See, your strength should be, if you are a fresher, see that your strength, by asking this particular question, he is just trying to judge your personality, whether you are positive, whether you are motivated, how you will be when you actually hit the floor, and what if you come through a tough situation. Will you be a good team player? How motivated you will be. So he will try to understand, he will try to evaluate your personality. So strengths ki jagah, talk like this. Say that you have a positive mindset, you have an urge to learn, you have also, you always want, you are a good learner, then you are always motivated.
then you learn to help. You are a good team player. Just talk some about the strength. That is how what it would be helpful. Okay, and if you are experienced and if someone is asking, then just try to elaborate. Just try to correlate things. For example, if you say that honoring a commitment is one of my strengths, what does this mean? If you commit to something and if you do that, if you give your 100% to do that, it means that you honor your commitment. So you can say that I honor my commitment, and then you can say how you actually did that in your last organization. Give them by examples, and that is how they will say that okay, this person has actually done that. Then this is another thing. उसके बाद guys, उसके बाद weakness. So weakness में guys, do not say a weakness which comes directly in the way when you start working. Your weakness should not be related to your job. कुछ अलग weakness बोलो. Like you can say that at times there was a phase in your life when you used to get somewhat emotional by looking at troubles and worries of other people, but then you realize that this is how life is. People may go to the some tough situations. That is how life is, and now you know how to deal with different type of situations as well. So whenever it comes to weakness, you can talk about the things which are not directly, which won't come in your way when you actually start hit the floor. Okay, so weakness, tell them that those weakness and tell them you have actually already worked on that, and now you know how to deal with that situation as well. So weakness के बारे में ये है, strength हो गया, weakness हो गया, then higher studies हो गया, highlight your weakness हो गया, how to tackle your career gap हो गया. So these are the few questions which I wanted to cover now. So this is being also aired on YouTube platform. So who, if you have any further question, any further queries related to this particular stuff, you can just comment it on the YouTube section. I've reserved my 4:30 to 5:30. Whatever the queries I will get from whatever platforms, I have reserved my 4:30 to 5:30 between this particular time. I will try to respond that. Chalo, now tell me. If you have any query, निकाल tell me, और उसके बाद अपन जो है wind up करते हैं. कुछ any specific doubt है, anything which is there related to interview? Yes. Whatever the queries I will get. Okay, tell me अगर कुछ specific है. Yes sir, thank you sir. वो ये पूछ रहा था कि मतलब इंटरव्यू में जो पैनल होगा उसमें एक से ज्यादा इंटरव्यूअर होंगे या फिर मतलब एक ही बंदा होगा जो कैंडिडेट को होल्ड करेगा? नहीं देखो, कैसे होता है, फर्स्ट इंटरव्यू तो अपना फोन पे ही हो जाता है, जहाँ पर इन लोग लेकिन फेस टू फेस करना है. हाँ नहीं, मैं बोलता हूँ, फर्स्ट इंटरव्यू सबसे पहले अलाइन तो जनरली फोन पे ही हो जाता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू अलाइन होता है. वहाँ पर टेक्निकल थोड़ा सा इंटरव्यू होता है. अगर आप फ्रेशर हो तो ज़्यादा टेक्निकल की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट जो प्रोजेक्ट मैनेजर रहता है आपका वो इंटरव्यू लेगा. डायरेक्ट जो प्रोजेक्ट मैनेजर है ही विल टेक दैट इंटरव्यू, और अलॉन्ग विद दैट देयर कैन बी समवन फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स टीम. तो होता क्या है, फर्स्ट इंटरव्यू एक रिक्रूटर ले लेता है, वो फोन पर ही हो जाता है वेदर यू आर गुड टू गो फॉर दैट सिचुएशन, दैट पर्टिकुलर स्किल सेट. इफ यू फाइंड्स यू आर गुड टू गो, वो वहां पर आपका इंटरव्यू अलाइन कर देता है. तो वहां पर जो है सेकंड जो बंदा आता है वो अगेन वन डिस्कशन ही होगा, फेस टू फेस डिस्कशन ही होगा. वो टेक्निकल, जनरली दिस इज हाउ हैपेंस. ऐसा नहीं कि स्ट्रिक्ट फास्ट ऐसे ही फॉलो होगा, बट जनरली ये रहता है. वो आके टेक्निकल इंटरव्यू ले लेगा, और अगर उसके साथ कोई मैनेजर फ्री रहा, इफ दे बोथ वांट टू डू इट इन एट द सेम टाइम विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, अगर दोनों एक टाइम पे फ्री है तो दोनों भी आ जाएंगे. ये टेक्निकल कर लेगा एंड मीनवाइल वो भी अपने आप को इवेल्युएट करते रहेगा. तो देयर इज नो स्ट्रिक्ट फास्ट एंड फॉरवर्ड रूल के सिंगल पर्सन ही लेगा या दो पर्सन लेंगे. बट सबसे पहले एक फर्स्ट राउंड होता है, फिर उसके बाद टेक्निकल राउंड होता है. टेक्निकल राउंड जनरली एक बंदा ही रहता है. फिर उसके बाद जो है जिसके टीम में आप एक्चुअली काम करने वाले हो वो रहता है, और जिसको आप रिपोर्ट करने वाले हो वो रहता है. अगर फिर भी किसी को डाउट है, किसी को फाइनल इवैल्यूएशन करना है, तो जिसके प्रोजेक्ट में आप काम करने वाले हो वो रहता है. तो ये दो लोग साथ में भी आ सकते हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है एंड योर इमीडिएट रिपोर्टिंग सुपरवाइजर. हो सकता है कि लोग साथ में आए या अलग अलग आके एक के बाद एक इवैल्यूएट करे. और जब फाइनल डिस्कशन होता है वो ह्यूमन रिसोर्स वाला जो टैलेंट मैनेजर वाला करता है, रिक्रूटर नहीं, ये टैलेंट मैनेजर रहता है. यहाँ पर ये थोड़ा सा और कुछ ड्रिल करने का देखता है. अगर कुछ सैलरी का फाइनल कुछ बोलता है, then all those things happen, and he can also have someone accompanied with him, वो project manager, और he may alone do it. तो ऐसे टाइप में होता है. It differs, इंडिविजुअल भी होता है, अगर इंडिविजुअल नहीं है तो दोनों साथ में भी होते हैं.
There is no need to worry much about that. तो सर ये जो रूल होता है ये गवर्नमेंट इंटरव्यू और ये आईटी इंडस्ट्री सबका सेम ही रूल होता है। देख, सॉरी, व्हाट जैसे कि जैसे मुझे यूपीएससी में जाना है तो वो सारा लॉजिक जो होगा इंटरव्यू का वो आईटी वाला जो होता है वो उसमें भी सेम ही होता है। हाँ, टेक्निकल राउंड्स अलग रहेंगे। अदर देन दैट, लोग आपको वही बेसिस पे जज करोगे, वही एलाबोरेट करोगे कि बंदा कॉन्फिडेंट कैसा है, सेंसिबल कितना है, उसका एटीट्यूड क्या है, और फिर उसका कॉन्फिडेंट कितना है। अगर आप गवर्नमेंट की बात करोगे तो उसमें आप, इफ यू आर गोइंग फॉर द वन पर्टिकुलर पोजिशन, तो वेदर यू आर केपेबल ऑफ टेकिंग दोज डिसीजंस, इफ यू आर सिलेक्टेड फॉर वन पर्टिकुलर पोजिशन, आप वहां पर ऑन द फ्लाई कुछ वो डिसीजंस लेने के लिए हाउ वेल इक्विप्ड यू आर, आपका लॉजिकल कैसा है, आपका रीजनिंग कैसा है, आपका लोगों के साथ बिहेवियर कैसा है, आपका फील्ड नॉलेज कैसा है वो स्पेसिफिक चीज के बारे में। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई गवर्नमेंट में समझो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कुछ जाकर वहां पर इंटरव्यू दे रहे हो, हाउ मच नॉलेज यू हैव अबाउट दैट, आप ग्राउंड वर्क कितना करके रखे हो। सिमिलरली आईटी में भी अगर समझो आप कोई कंपनी के बारे में काम कर रहे हो, आप बेसिक, इट जस्ट शोकेसेस हाउ मच इंटरेस्टेड यू आर इन दैट। अगर आप कोई कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट के या एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में, या कोई पीएसयू सेक्टर में जाके बात कर रहे हो, हाउ मच यू आर अवेयर ऑफ दैट, आपका नॉलेज कितना है। इसके साथ साथ एक ओवरऑल जो रीजनिंग रहता है, जो जनरली जो करंट अफेयर्स के बारे में कितना बंदा अवेयर है, करंट अफेयर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इट जस्ट गिव द फील टू देम के क्या, हाउ मच यू कैन, हाउ विजिलेंट यू आर। ऐसा तो नहीं रहना चाहिए बंदा कि खाली जितना चाहे उतना प्रिपेयर, जितना चाहे उतना प्रिपेयर। तो हिस्ट्री के बारे में भी सी, इट अगेन डिपेंड्स। गवर्नमेंट इंटरव्यूज, अगर कोई स्पेसिफिक गवर्नमेंट इंटरव्यूज, एनी स्पेसिफिक इंटरव्यू दैट यू आर थिंकिंग अबाउट, निगार? नो, कभी नहीं नहीं। ना, अच्छा। तो इसमें भी काफी सारे चीज रहते हैं, आईएएस ऑफिसर्स रहते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स रहते हैं, उसके यूपीएससी रहता है, एमपीएससी रहता है। तो इसमें तो आई एम डूइंग प्लान फॉर आईएएस ऑफिसर तो इंशाल्लाह। उसमें इफ यू आर प्लानिंग राइट, यू उसमें कुछ बाइफोकेशंस रहते हैं। आपको 3 से 4 पैनल्स रहते हैं, एज फार एज आई नो, एंड दे विल बी फ्रॉम स्पेसिफिक फील्ड्स, और उन लोग स्पेसिफिक क्वेश्चंस करेंगे दैट कैन बी रिलेटेड टू एनी स्पेसिफिक इंटरव्यू, लाइक हिस्टोरिकल में भी दे विल आल्सो चेक यू, वो ओवरऑल इवेल्युएट करेंगे। दोज एग्जाम्स उसमें ओवरऑल इवेल्युएट करेंगे उन लोग, आपको हिस्ट्री नॉलेज देखेंगे, आपका करंट अफेयर नॉलेज देखेंगे, what are your views about ongoing topic, are you diplomatic enough to handle the given situation। अगर आपका कोई अगर कंट्रोवर्शियल इश्यू के बारे में कुछ समझो डिस्कशन चल रहा है, हाउ प्रोबेबली, हाउ डिप्लोमेटिकली, हाउ वेल यू कैन हैंडल दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, what is your mindset about that, whether if someone is asking you to go ahead and enroll something, if people are opposing that, how will you be in a position to solve that। so ये सब चीजें ऑटोमेटिकली यू हैव टू बी गुड इन दैट। अगर आप यूपीएससी, आईपीएससी, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, अगर ये सब चीजें, कलेक्टर, ये सब चीजों के बारे में इफ यू आर गोइंग है, देन ऑल दिस थिंग्स शुड कम इनटू पिक्चर। हाउ विल यू एग्जीक्यूट योर टास्क। उसके बाद माय फ्रेंड गॉट सिलेक्टेड in one of the as one of the police officers in Mumbai. So when he was being interviewed, he was being drilled on one thing, like historical aspects। इस for historical aspect, उसके बाद current affairs, तो कोई भी चीज हो सकती है। so वो चीज के बारे में you have to be, first of all, जो भी related चीजें हैं, current affair के चीजें हैं, then policies are there, what are the current policies, कौन से state में what all things are there, who are the chief ministers, who are the finance ministers, or what is the latest policy which will be affected, कोई specific चीज उसके बारे में आपका opinion। so if you are going and preparing for those particular things, then these are the things which you have to take care of। तो वहां पर वो सब चीजें होंगी, और वहां पर एज फार एज आई नो, उसमें पैनल्स हो सकता है कि 2 से 3 पैनल्स रहेंगे, और अलग अलग एक के बाद एक को जज करोगे। और पर्सनालिटी, हाउ यू ड्रेस, आर यू फॉर्मली ड्रेस्ड अप, उसके बाद में एज फार एज आई नो, दे ऑल्सो नोटिस द सैंडल्स, द वे पर्सन फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, पोस्चर, एवरीथिंग वो और ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं। those things are strict, but there is a choice। if you want to answer in Hindi, you can answer in Hindi, you can, they will ask you, if you want to answer in English, you can answer in Hindi, whatever language you are comfortable। generally they ask you this first question, और उसके बाद में लोग आपको ड्रिल कर रहेंगे। वो हिस्टोरिकली ड्रिल करेंगे, करंट अफेयर्स पे ड्रिल करोगे, पॉलिसीज पे ड्रिल करेंगे, एंड योर ओपिनियन ऑन वट एवर इट इज उस पर भी ड्रिल करेंगे। तो दैट इज हाउ इट हैपेंस जनरली।
अगर आप यूपीएससी आईपीएससी अगर वो चीज़ों की बात कर रहे हैं तो दैट इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर. उनके बुक्स रहते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें रहते हैं. आई रिमेंबर टेक्सटिंग सम प्रिपरेशन समथिंग टू यू राइट फ्यू मंथ्स बैक. तो वहाँ पर भी सम बुक्स एंड समथिंग सम प्रिपरेशन का किसी ने सजेस्ट किया था. सो वो बुक्स ये वो रिफर करके, बट दैट इज हाउ इट इज अल्टीमेटली. पर्सनैलिटी तो कॉन्फिडेंट रहना चाहिए. उसके बाद हाउ विजिलेंट यू आर, फिर उसके बाद स्कोरिंग कैसे है उसके हिसाब से उन लोग अलोकेट करेंगे अलग अलग चीजें. अगर रैंकिंग के बेसिस पे देन दे विल अलोकेट यू. वहाँ पर भी अलग अलग फील्ड्स रहते हैं. तो वो प्रिपेयर करते रहना चाहिए और क्लियर करते रहना चाहिए. एंड इट हैपेंस, कॉन्फिडेंटली जवाब दो सब चीज़ का. सो इट ऑटोमेटिकली क्लिक्स. बट यू हैव टू बी थरली अवेयर अबाउट पॉलिसीज हिस्ट्री एंड एवरीथिंग. दूसरे जॉब्स में ये सब चीज़ें लिमिटेड रहती है. उन लोग अपने रिलेटेड देखेंगे और ओवरऑल पर्सनैलिटी देखेंगे. मगर आप आईपीएस की वो सब चीज़ों की कर रहे हैं तो कंपटीशन टफ है. सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट. और रैंकिंग के बेसिस में रिटर्न रहता है, ओरल रहता है, वाइवा रहता है, हर कोई चीज़ रहती है. तो अकॉर्डिंगली हर एक चीज़ के लिए प्रिपेयर करो. ओके, एनीथिंग एल्स? No, sir. Thank you. चलो चलो, वी विल लॉग ऑफ. होप दिस थिंग हैज हेल्प्ड यू. और कुछ क्वेरी है तो जस्ट लेट मी नो, और एल्स यू कैन लेट मी इन द कमेंट सेक्शन. यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे ही डाल दो. So guys, we will log it off. Who all there? Who all are? I don't know whether anyone is watching on the YouTube. If anyone is watching on the YouTube now, if you have any query, just text it. I will get back to you. If you see this video afterwards, then queries will be responded between 4:30 to 5:30 on daily basis. So do not hesitate to raise a query. And that's it, guys. All the best. Take care. We'll catch up somewhere soon. I will make some announcements.